हरे कृष्ण सभी वन्य बी శాస్త్రభాషాన భగవద్గీత మాజమి 6వ అధ్యాయను శ్లోక్ నంబర్ 17 అని 18 આજનો શ્લોક युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः सकल दुःख विनाशकरानु योग उपयुक्त आहार विहार करणारावन्ने यथा प्रकार कर्मनु व्यवहार करणारावन्ने जागृत निद्राम समान अवस्था अनुकरण करणारावन्ने सिद्धी प्राप्त होच यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा मन कवा संपूर्ण परमात्माकडेच स्थिर होच तवा भोग भोग आणि अपेक्षानु इच्छा होतू नाही ते व्यक्तीनं योगी कैकन बोलच